Good morning, ma'am. 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 Good morning. सर क्लास नहीं करना है। इसको खींच दो। Good morning, ma'am. हो जाएगा, सुनो। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning, children. Good morning, How are you? How are you all? Good morning, Ma'am, we are fine. 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 We are I am fine. What about you? So, a very good morning to all of you. Children, we are looking after a long period today. और दिन के बाद हम लोग मीट कर रहे हैं, है ना? Yes, ma'am. Yes. How did you all spend your holidays? Yes, ma'am. How did you spend? Was it nice? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fruitful? Did you all study? Or you Yes, only ma'am. enjoy? केवल enjoyment हुआ कि पढ़ाई भी हुआ? मैम पढ़ाई भी हुआ। मैम बोल। मैम पढ़ाई। Okay. Then today, children, we will start with a new chapter. आपको visible है blackboard बेटा? Blackboard is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है? और Yes, ma'am. okay. चलो. Okay. So today we are going to start. You all have completed your homework and all. सब homework बना लिए थे? Yes, ma'am. Yes, पीछे ma'am. का जितना work था सबका खत्म हो गया? Yes, ma'am. ma'am. Very good. चलिए. Then we will be coming to the next topic, that is your soil, chapter number 10 of your book. Okay. So this chapter, soil, as we can say that air is essential for us, water is essential for us. The same way we can say, children, that soil is also very, very important. And we don't have any alternative to grow crops other than soil. Soil के अलावा हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है जहां हम अपने पेड़ पौधों को उगा सकते हैं. And for cultivating crops,
we need a fertile soil. हम लोग को fertile soil की जरूरत है. So it is not so that only fertile soil is available, but there are different quality of soil or different types of soil, and the formation of this soil is also different. So first of all, step by step, we will come to this topic first. What is soil and how it is formed? Now it is, we cannot say that it is present in the nature and it is already, we can use it or utilize. No, it is a slow process. It is a continuous process. ये continuous process है, slow process है, and it takes a long time for the formation of it. So first of all, for the definition of the soil, we can say that it is a naturally occurring loose covering or broken rock particle and decaying organic matter on the surface of the earth. Did you understand this language? आप समझ गए ये language? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. So if you have understood, Yes, ma'am. or I will simplify it. For simplicity, we can say that, or to simplify it, we can say that it is a part of the rocks which are present on the surface of it. And when these rocks, they break, then slowly and gradually, these rocks convert into soil. And this conversion takes a long period of time. For it takes 500 years to produce just less than 1 inch of topsoil. And we all know that whatever utility we are taking in the or benefit we are doing with the help of soil is through the topmost layer. Topmost layer is responsible for the growth of the plant. And this is prepared by the dead and decaying matter also, and the withering or the word I am using. Are you able to understand this word withering? Withering का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? And Withering the का breaking मतलब of rocks into small हाँ, particles. To similar particles. very good children. Breaking up of rock. Rock का breaking जब होगा, that is known as withering. And this withering takes 500 years to just form a few inches of. So children, this is very important that we have to preserve this soil from being washed away, from being eroded or being blown away. So all these things can be done with the help of more and more plantation. ज्यादा से ज्यादा plantation करने से मेरा ये जो erosion है या washing है, that will be avoided or that will be stopped to some extent. Clear? So this, what we are going to see here, that how is this soil formed? The second topic is soil formation. How is this soil formed? What are the factors responsible for formation of soil? So first of all, the basically it is divided into two. दो तरह में divided है, और first है आपका physical withering and second is your chemical withering. Now physical, you all understand, physical means the things that appear, that take place in front of us. जो changes हमारे आँख के सामने होता है, उसको हम लोग physical withering है, यहाँ पर, in this context. Clear? So physical withering has got 4 factors. What are the 4 factors over there? First is your temperature. पहला temperature है, दूसरा water है, तीसरा wind है, और चौथा plant and animals. Please children, don't talk in between. आपस में बात मत करिए. Just now we are in the topic and we are going on through the explanation. So what I was talking, that there are 2 types of breaking. 2 तरह का breaking होता है. एक होता है physical और दूसरा होता है chemical. So physical withering is taking place according to the 4 factors. It is affected by 4 factors. जो 4 factor क्या क्या है?
First is temperature of the environment का temperature. Is it the same throughout the year? क्या वो same रहता है? No, ma'am. Children, No, please ma'am. interact. क्या No, ma'am. No, ma'am. temperature same नहीं रहता है? So if the temperature is not same, then it will be sometimes very cold, sometimes it will be very hot. So this temperature change also brings about the breaking up of the rock pieces. कभी बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, कभी बहुत ज्यादा गर्म, तो उसमें क्या होता है, cracks आते हैं due to this temperature change, and these cracks they increase in the course of time. During the course of time, due to the water current, like those rocks which are near the seabed, जो seabed के पास है, उसमें अगर टेम्परेचर के कारण आपका क्रैक्स आ रहा है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वाटर करेंट्स उसको और ब्रॉडर करेंगे, लार्जर करेंगे, और वो तब larger pieces will break into smaller pieces due to the force of the water, which is the your second point for physical. Then comes the wind. Those places which have got abrasive or very, you can say, high pressure of wind, in those areas the wind also acts on those bigger rock pieces, and they create you can say cracks, or they help the smaller pieces which are created through the action of temperature and water to be carried from one place, and they put pressure on the bigger pieces. आप कभी जब strong या wrong ये बहुत stormy day होता है, उस दिन आप कभी बाहर निकल के देखते हो, आपको पीछे से बहुत प्रेशर आता है और आप बिना कोई एफर्ट के आगे चलते हो. So these pressures are created due to wind in those areas also where these rocks are existing or rocks are there in the environment. Then what happens in the cracks created or in the places created by these action of temperature and water and wind, certain lower organisms, lower plants, they start growing in them because they are getting proper environmental condition. Water वहाँ available है, उसको space growth के लिए है, और वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें grow करेगा. Now when they start growing, they try to expand their self with the expansion of the roots. Root के expansion से वो उसमें expand करना. आप कभी कभी देखते होंगे ना कि पत्थर पर बहुत सारा पेड़ पौधा जम गया, तो वो क्या करता है, वो अपने रूट्स को एक्सपैंड करता है. उसके जब रूट एक्सपैंड करेगा उसमें, then what will happen, larger holes will be created, larger spaces will be created, and that will help the rock to break into a smaller pieces. So these are the 4 points which are concerned with the physical withering. Till here, physical withering is clear to all of you, or should I repeat it? Ma'am, can you repeat water? Ma'am, can you repeat water? Ma'am, can you repeat water? Okay, आप लोग एक बार और सुन लो. There are 2 types of withering. 2 तरह का withering होता है salt formation के process में. First होता है physical withering, दूसरा होता है chemical. Here the changes are taking place in front of our eyes, and we can see that the physical appearance is changing. The bigger rock pieces are broken into smaller pieces. So that is physical withering. And what are the factors responsible for that? The factors which are responsible for that is your temperature, water, wind, and plants and animals. Now, as I told you, or you know also that the temperature does not remain same throughout the year. पूरे साल temperature कहीं का भी same नहीं होता. कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, and they reaches to extreme also.
then that extreme temperature creates a cracking in the bigger rock pieces, and that cracking is helping the withering of rocks, helping in the withering of rocks. जब बड़ा टुकड़ा, आप कोई बड़े टुकड़े को जब भी घर में भी, अगर मान लो एक बड़े पत्थर का टुकड़ा, एक बड़ा ईंट का टुकड़ा आप ले लो, जब आप उसको तोड़ने जाते हो तो पहले क्या करते हो, उसको थोड़ा सा प्रेशर डालते हो, हैमर करते हो, तो क्या होता है, दो भाग में बढ़ जाता है। उसको और छोटा टुकड़ा बनाना है तो और हैमर करेंगे हम लोग। तो दैट मींस व्हाट, that this hammering is done with not with the help of hammer. वो हैमर से नहीं किया जा रहा है, वो टेम्परेचर डिफरेंस से किया, और that temperature difference is not acting in one day. एक दिन में वो टेम्परेचर डिफरेंस उस पर एक्ट नहीं करेगा, it will take several years, बहुत लंबा टाइम ले। That is why it is said that 1 inch, few inches का soil बनने में 500 years लगता। So you just imagine. And then this addition is done by the dead remains of plants and animals. Remains of plant and animals helping formation of this. Clear? Now, second point is what? अब देखो, जहाँ पहाड़ है कभी कभी वहां नदियां भी होती हैं या रेन्स भी फॉल करते हैं, तो these water as water currents, water केवल नहीं, water currents which are present by the side of these mountains or rocks, ये आपको क्या करेगा, आप कभी वाटर करेंट्स देखे हो, कभी सी के पास गए हो या रिवर के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार जब आप जाते हो तो उसका वेव बहुत ही स्ट्रांग होता है, और वो कहाँ हिट करता है, टूवर्ड्स द शोर, जहां पर उसको एक बाउंड्री लाइन मिलता है। तो शोर पर क्या होता है, आइदर रॉक पीसेस होगा या सैंड होगा, तो दे वॉश अवे ऑल दोस पार्टिकल। अगर सैंड होगा तो वो लाइटर होता है, तो वो वॉश्ड अवे होगा, लेकिन अगर रॉक होगा वहां पे तो क्या होगा, वो उसको टॉलरेट करे, लेकिन टॉलरेट करने के साथ साथ वो उसको ब्रेक करे, दैट विल ब्रेक इट बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। देन आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज योर विंड। विंड इज ऑल्सो, वी हैव, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि ये एनर्जी का एक फॉर्म है, और जहां ये स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करता है तो वो that strength we can just imagine when we are walking in opposite direction towards the wind. जिस तरफ से विंड आ रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो आप देखोगे कि आपको बहुत फोर्स लगाना है। तो then the same way, ये जिस एरिया में वर्क कर रहा है to break the rock, it is acting very strongly, and they are also adding in the breaking up of, वो breaking up of rocks में भी add। clear? अब क्या होगा, जब ये break कर गया, थोड़ा थोड़ा cracks आ गया, so ये rock pieces, अब वहां पर उसको space मिल गया, किसको, plants और lower organisms को, जैसे बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुआ, lower plants हुआ, amoeba हुआ, they all start growing in these cracks and crevices. Cracks and crevices means the cracks which are, or the holes which are made by the action of temperature, water, wind. ये सब से जो crack बना mountains पे या soil, ये rocks पे, तो ये crack का जो formation हुआ, यहाँ पर growth हो जाएगा plant और animal। अब प्लांट और एनिमल क्या करेगा, अपना पहले प्लांट्स उसमें ये एक्सपैंड करने लगेगा, रूट एक्सपैंड करने, तो वो क्या करेगा, अपना जगह बनाएगा। तो जगह बनाने के लिए वो उसको थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करे, और दैट स्ट्रेचिंग विल इलैबोरेट द होल्स व्हिच आर कॉज्ड इन द रॉक्स। इज इट क्लियर? एनिमल्स भी कुछ अपना केमिकल स्टोर करेगा, या अपने रहने के लिए, कभी आप एंट को देखे हो या रैबिट को देखे हो? Yes, ma'am. अपना बरोज बनाने के लिए Yes, ma'am. रैबिट जो बरो बनाता है वो क्या करता है, सॉइल को निकालता है, या स्नेक्स रहता है
वो अपना होल बनाता है अपने रहने के लिए. So these animals have got the natural tendency to make their habitat inside these cracks and crevices. और जहां उसको obstacle लगेगा वहां वो उसको प्रेशराइज करेगा ब्रेक करने के लिए और इलाबरेट करने. और तब धीरे धीरे उससे क्या हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा रॉक्स धीरे धीरे करके ब्रेक. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. फिजिकल विजिट. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाइए केमिकल विजिट. Yes, ma'am. नाउ व्हाट इज दिस वर्ड केमिकल? केमिकल वर्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रहेगा. तो व्हाट आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर देयर इन द नेचर? यहाँ कोई केमिकल्स जाकर डाल नहीं रहा, कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं डालता, वो आपको नेचर में ही वो केमिकल प्रेजेंट है एंड दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक. एंड व्हाट आर द केमिकल्स? ऑर्गेनिक मैटर, जो अभी हम आपको बोले एनिमल्स के थ्रू या प्लांट्स के डेवलपमेंट के थ्रू तो जो ऑर्गेनिक मैटर निकला दैट इज पोर्ड इन द रॉक. तो वो रॉक में पोर्ड हो गया ऑटोमेटिकली नेचुरली एंड दैट हेल्प्स इन ब्रेकिंग अप. वो रॉक को ब्रेक करने में मदद. Solvent action of water that dissolves the soluble salt and forms solution further hasten the process of weathering. Now we all know that water is a universal solvent. ये पता है ना हम लोग को, वाटर में बहुत सारा चीज घुल जाता. तो जब ये पानी के किनारे अगर रॉक है तो जितना भी केमिकल्स होगा, केमिकल एक्शन के थ्रू जो स्मॉलर पीसेस होगा वो क्या होगा, ब्रेक करके आपको स्मॉलर पार्टिकल्स में जाएगा और स्मॉलर पार्टिकल्स फिर वाटर में डिसॉल्व. So in that way also the chemicals which are poured in the soil through these plants and animals, they are getting dissolved in the water or the seabed or the ocean. अब ओशन के किनारे अगर रॉक पीसेस है तो वो क्या होगा, सॉल्ट एक्शन भी उसमें होगा क्योंकि ओशन का पानी क्या होता है, सॉल्टी होता है. So in that way we can say that these actions which are there or the chemicals which are present in the environment, they are adding to the withering up. Clear? अब देखो जैसे लिचेंस है, जैसे अमीबा है, लाइक स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स है, देयर फेशियल मैटर है, कुछ भी जो भी वो नेचुरल वे में कर, दे ऑल आर कंटेनिंग केमिकल्स. और वो केमिकल कहाँ पोर हो रहा है, वो कहीं जाके दूसरी जगह तो उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे ना. तो दे ऑल आर गेटिंग डिस्कार्डेड इन द these cracks and crevices, or these are adding to the withering. Is it clear to all of you? Yes, ma'am. I don't understand. आप देख लो यहाँ पर do you know में कुछ आपको नाम किया हुआ है, like actinomycetes is a type of filamentous bacteria जो कि ग्रो करता है सॉइल में or in damp soil, and when the soil dries out the bacteria produce spores in the soil. So these all things which are produced in the environment, जो environment के में produce हो रहा है वो आपको एक different action leave कर रहा है. They are just giving pouring a different action on the rock pieces and that is helping in withering or breaking up. So I think till here, am I clear to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, चलिए then we will come to soil profile. अब हम लोग soil profile की बात. Now children, have you ever seen? आप अपने जनरल एक्सपीरियंस से बताओ कि कभी आप कहीं सॉइल का डिगिंग देखे हो, कहीं बहुत गहरी खुदाई देखे हो जिससे Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am.
पॉइंट्स पे जहाँ Yes, पर ma'am. ड्रिलिंग में होता है, Yes, ma'am. या फिर आपको जहाँ पर आप इसके लिए होता है वाटर लेवल के लिए, मतलब टू टेक आउट वाटर फ्रॉम द अर्थ। तो आप दोनों I had केसेस में played hand pump. हैंडपंप या बोरिंग जहां पर होता है, वहां पर भी आप देखोगे कि जैसे जैसे आपको वो numbers they dig in the soil, they bring out different texture of soil from inside. और वो लोग देखो, वो लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं होते, they are not very well educated, लेकिन they know that at the lowest level बेड रॉक होता है और या सॉलिड रॉक होता है, जहां पर खुदाई करने से वाटर लेवल मिलता है। They know that through their experience. तो जब वो खुदाई करने लगते हैं तो वो इसी सर्च आउट में होते हैं कि कहाँ पर रॉक का पार्टिकल्स आने लगे। जब वो खोदते खोदते उस लेवल पर पहुंचते हैं, then they insert the pipes and then to take out the water. लेकिन अभी हम लोग उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज द O horizon. It is divided into different layers and they are known as soil horizons. And this arrangement of horizons, they are known as profiles. They are known as clear. Then here, soil horizon. Soil horizon, when we are talking about, तब आप देखिए, just see this photo. Ma'am, your video is paused. Yes. Pause है, आप, I'm just sharing you this profile. Is it clear? आपको दिख रहा है ये picture? Yes, ma'am. Yes, ma'am. It is much clear. Yes, That is ma'am. why I'm speaking. Yes, आप ma'am. देखो, ये आपका surface layer, organic layer, then topsoil, subsoil, parent material, and bedrock. Just see how clear layering of the soil is done in nature. Nature में कितना clear cut layering of the soil है, और आपको इसी को हम लोग horizons कहते हैं। फर्स्ट आपका ऑर्गेनिक मटेरियल जहां है उसको O horizon कहेंगे। सेकंड आपका टॉप सॉइल है, दैट इज A horizon. Then third is your subsoil, that is B horizon. Then C horizon is your withered or decomposed rock, and last is your R, that is R horizon, that is your bedrock. So this clear cut, you can see the diagram, and it is very, very, you can say, elaborated